गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स एंड रफाल मरीन जेट्स। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस और सिक्योरिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने आपको पता है कि एक्विजिशन की मंजूरी दे दी थी और उसी के बाद जो है पीएम मोदी जो है उन्होंने 3 एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन्स और 26 रफाल मरीन फाइटर जेट्स जो है नेवी के लिए फ्रांस से परचेज करने का जो है वो डिसीजन लिया था। तो अब हम इन दोनों के बारे में देख लेते हैं कि ये स्कॉर्पियन क्लास मरीन सबमरीन्स क्या होती हैं और ये रफाल जो मरीन जेट्स हैं या मरीन फाइटर जेट्स हैं ये क्या हैं। तो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स इंडिया में ऑलरेडी माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड बना रहा है मुंबई में। 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स जो है वो प्रोजेक्ट 75 के अंदर बन चुकी हैं और 3.75 बिलियन डॉलर्स की डील थी, 2005 में साइन हुई थी और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट था जिसमें फ्रेंच डिफेंस फर्म नेवल ग्रुप ने जो है ये ट्रांसफ़र की थी टेक्नोलॉजी और एमडीएल इसको बना रहा था। अब जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं 220 फीट लॉन्ग होती हैं, 40 फीट टॉल होती हैं, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है ये रीच कर सकती हैं। डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम इसमें लगा होता है और इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम्स भी होते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा देर तक ये जो है वो समुद्र के नीचे रह सके। और ये जो अगर हम न्यूक्लियर सबमरीन से इसको हम कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स न्यूक्लियर सबमरीन तो जो ज़्यादा हैं वो आपके सुपीरियर होती हैं, अनलिमिटेड इंड्योरेंस होती है क्योंकि वो नीचे ही उनके जो है सबमरीन जो है नीचे पानी के नीचे ही जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, न्यूक्लियर जो है फ्यूल का इस्तेमाल करते हुए। और वो ज़्यादा तेज़ी से जो है वो मूव कर सकती हैं कन्वेंशनल सबमरीन्स के मुकाबले। इंडिया के पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं अरिहंत क्लास की, लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन्स को जो है वो मेंटेन करना भी बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। इसीलिए जो है 3 न्यू सबमरीन्स इंडिया को जो है वो प्रोक्योर करने की ज़रूरत है। 16 ऑलरेडी हमारे पास हैं इन सर्विस, 7 सिंधु घोष हैं, 4 शिशुमार क्लास हैं, 5 जो है कलवारी क्लास हैं। और अगर हमको फुल अपना काम करना है, अपने जितने भी ऑपरेशंस इंडियन नेवी को जो है वो पूरे करने हैं, तो 18 सच सबमरीन्स चाहिए होंगी। 30% जो सबमरीन्स तो आपको पता है रेट्रोफिट रिफिटिंग में या फिर जो है रिपेयर के टाइम के में ही रहती हैं मोस्टली, ठीक है। तो इसलिए हमें 18 के करीब सबमरीन्स चाहिए होती हैं। अगर हम रफाल जेट्स के बारे में देखें और उसके मरीन वर्जन के बारे में देखें तो फ्रेंच डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है, लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स इसमें लगे हुए हैं, मॉडर्न सेंसर्स हैं। और जो नेवल वेरिएंट है फाइटर रफाल फाइटर जेट्स का वो इंडिया प्रोक्योर कर रहा है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा ऑफ कोर्स, इसमें फोल्डेबल विंग्स होंगे, लॉन्गर एयर फ्रेम होगा लैंडिंग करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर, टेल हुक भी होगी ताकि लैंडिंग को जो है वो ठीक से किया जा सके कैरियर पे, क्योंकि कैरियर एयरक्राफ्ट कैरियर पे उतना बड़ा रनवे तो अवेलेबल नहीं होता है ना। तो अब जो है इसलिए हमको नीड क्यों है हमें रफाल फाइटर जेट्स की, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास रशियन मिग-29K हैं और जो कि आईएनएस विक्रमादित्य पर जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। और मिग-29 जो है वो अगले 10 सालों के अंदर जो है वो रिटायर हो जाएंगे। तो नेवी के पास सिर्फ 2 ऑपरेशन अब और हमारे नेवी के पास अब 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। तो हमारे को ऑफ कोर्स डेक बेस्ड फाइटर जेट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं CPTPP। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूके ने फॉर्मली एग्री किया है कि वो पहली यूरोपियन कंट्री बनेंगे CPTPP को ज्वाइन करने वाले। तो CPTPP क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, 11 कंट्रीज़ के बीच में इसको साइन किया गया था मार्च 2018 में। इससे पहले इसको हम ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप कहते थे, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे यूएस के तो 2017 में उन्होंने इस नेगोशिएशन से जो है वो विड्रॉ कर लिया था। बाकी की जो 11 कंट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी सारी की सारी जो है वो एपेक की मेंबर्स हैं। अब इसमें जो है टैरिफ जो है कम किए जाएंगे, मार्केट्स अपनी सर्विस मार्केट जो है ओपन अप की जाएंगी, लिबरलाइज की जाएंगी वीज़ा कंडीशंस, ठीक है। तो एपेक क्या है? एपेक 21 एशिया पैसिफिक इकोनॉमीज़ का जो है एक फोरम है। 1989 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था फ्री ट्रेड प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रमोट करने के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सिंगापुर में, ठीक है। जितने भी डिसीजंस होते हैं वो कंसेंसस से लिए जाते हैं, याद रखना इंडिया इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने रिसेंटली कंट्री का हाईएस्ट ऑनर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो है वो पीएम मोदी को जो है वो कॉन्फर किया है। ये जनरली हाईएस्ट फ्रेंच डेकोरेशन है, चाहे वो सिविल हो चाहे मिलिट्री हो, और इसको 5 तरह के जो है वो डिस्टिंक्शंस में दिया जाता है। अगर आप इसको कंपेयर करो तो इंडिया में जो भारत रत्न का अवार्ड होता है,
ठीक है, वैसे ही जो है ये ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन जो है ऑफ ऑनर जो है वो फ्रांस का होता है। इसको नेपोलियन ने बनाया था 1802 में। और ये किसको दिया जाता है? फॉरेनर्स को भी दिया जा सकता है अगर उन्होंने कुछ ऐसी सर्विस दी है या फिर ऐसे कुछ कॉजेज़ को जो है वो सपोर्ट किया है जो कि फ्रांस जिसको सपोर्ट करता है या डिफेंड किया, जैसे ह्यूमन राइट्स को, फ्रीडम ऑफ प्रेस को, ह्यूमैनिटेरियन एक्शन को। कोई मटेरियल फाइनेंशियल बेनिफिट तो नहीं मिलता इसमें, और लेकिन जो है ऑफ कोर्स ये 5 आर्म्ड मैल्टीज एस्टरिस्क जो है वो जो है एक अवार्ड मिलता है, और इसका जो रिबन होता है वो रेड कलर का होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पार्किंसंस डिसीज़। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। न्यूरोसाइंटिस्ट ने रिसेंटली जो है वो पाया है कि एक्सरसाइज करने से जो है पार्किंसंस डिसीज़ की जो है प्रोग्रेस को स्लो किया जा सकता है। अब ये पार्किंसंस डिसीज़ है क्या? ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो कि नर्व्स द्वारा कंट्रोल होते हैं उनको अफेक्ट करती है। और ये पेशेंट जो है उसको जो पेशेंट है जो उसका लिमिटेड या फिर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रह जाता है अपनी बॉडी की मूवमेंट पे या बॉडी के बैलेंस पर। ये धीरे धीरे जो है वो एज के साथ जो है वो अकर होता है। इसका करंटली कोई क्योर भी नहीं है। मैन जो है वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं पार्किंसन से, और डीजनरेशन ऑफ नर्व सेल्स इसमें होने लगते हैं। ठीक है, नर्व सेल्स या तो मर जाते हैं या फिर इम्पेयर हो जाते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें? ट्रेमर्स मतलब हाथ हिलेंगे, मूवमेंट में दिक्कत आएगी, अदर और जो है बैलेंस भी इम्पेयर हो जाएगा। कोई ब्लड लेबोरेटरी या फिर रेडियोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल नहीं है पार्किंसंस डिसीज़ को जो है वो डायग्नोस करने के लिए। तो बेसिकली सिम्टम्स के बेसिस पर ही जो है वो डॉक्टर्स बताते हैं कि ये पार्किंसंस डिसीज़ किसी पर्सन को हुई है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मीजल्स। ये भी सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी जो है उन्होंने कहा है कि लंदन जो है वो रिस्क पर है मीजल्स आउटब्रेक के। तो ये हाईली कंटेजियस सीरियस एयरबॉर्न डिसीज़ है। वायरस से होती है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करती है। जब 10 से 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो हाई फीवर हो जाता है जब ये वायरस किसी को भी एक्सपोज होता है कोई पर्सन वायरस से, तो फिर कुछ टाइम बाद रैश इरप्ट होने लगते हैं बॉडी के ऊपर। अनवैक्सीनेटेड यंग चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट पीपल जो है वो सबसे ज़्यादा इसके रिस्क पे होते हैं। कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है। ऑफ कोर्स वैक्सीन तो अवेलेबल है। 2001 में जो है वो फॉर्म की गई थी एक पार्टनरशिप, उसके अंदर जो है ये ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान के अंदर मीजल्स एंड रुबेला वैक्सीनेशन जो है वो WHO प्रोवाइड करवा रहा है। इंडिया में भी जो है मीजल्स एंड रुबेला वैक्सीन का जो है प्रोग्राम चल रहा है, आपको बताइए होगा, है ना। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रबर बोर्ड ऑफ इंडिया। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूमर्स को डिसमिस कर दिया है जो कह रहे थे कि न्यू रबर बिल आने की वजह से रबर बोर्ड को जो है वो चेंज कर दिया जाएगा या उसको डिसबैंड कर दिया जाएगा। तो रबर बोर्ड ऑफ इंडिया है क्या? स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है, रबर एक्ट के अंदर इसको बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करती है, और ये रबड़ इंडस्ट्री को जो है डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो भी स्टेटिस्टिकल डेटा होता है रबड़ के ऊपर वो ये मेंटेन करते हैं। और लाइसेंसिंग भी देना जो है रबड़ प्रोड्यूसर्स को, मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स या ट्रेडर्स को, वो भी यही काम करते हैं। और चेयरमैन इसको हेड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड। 28 मेंबर्स होते हैं। केरला में कोट्टायम में इसका जो है हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2.0। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली ऑपरेशनल गाइडलाइंस जो है PLI स्कीम 2.0 के लिए जो है वो इशू की गई हैं। और ये PLI स्कीम है क्या? फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा इसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को, ताकि लार्ज इन्वेस्टमेंट्स जो है वो आ सकें वैल्यू चेन में। अब इसके अंदर जो है ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों कंपनीज़ को जो है वो ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे। PLI 2.0 स्कीम में लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन PC, सर्वर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर, इन सब के जो है इन सब को टारगेट रखा गया है। और हाइब्रिड फॉर्मेट की इंडस्ट्रीज़ को भी जो है वो, हाइब्रिड मतलब ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों ही जो होती हैं जो कंपनीज, उनको भी जो है ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ठीक है, अब ये 6 साल के पीरियड के लिए जो है इंसेंटिव्स जो है दिए जाएंगे। और जो है कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जितनी आप अपनी सेल को बढ़ाओगे उसके हिसाब से आपका इंसेंटिव बढ़ता जाएगा। तो जो सेल जो है वो कौन से ईयर से देखी जाएगी? 2022-2023 के हिसाब से उसको बेस ईयर माना जाएगा, और उसके बेसिस पे आपकी सेल्स को देखा जाएगा कितनी आप इंक्रीज़ करते हो सेल, उसका जो है कुछ परसेंटेज आपको जो है वो गवर्नमेंट रीइंबर्स करेगी या इंसेंटिवाइज करेगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं उमियाम डैम। ये भी टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटीज़ ने रिसेंटली कहा है कि उमियाम डैम से जो है पानी कभी भी छोड़ा जा सकता है, क्योंकि जो है सेफ लेवल से ऊपर जा रहा है इस रिजर्वायर में पानी। तो ये उमियाम डैम जो है बारापानी डैम भी इसको हम कहते हैं, मेघालय में सिचुएटेड है। उमियाम रिवर के ऊपर ही है ऑफकोर्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए जो है इसको बनाया गया था। 1964 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, 1965 में कंप्लीट हुई थी। उस टाइम पर इसको असम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नामदा आर्ट।
आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के, उन्होंने पहले ही बैच जो है नामदा आर्ट प्रोडक्ट्स का वो जो है वो फ्लैग किया है एक्सपोर्ट के लिए यूके में। तो नामदा क्राफ्ट जो है कश्मीर का बहुत ही जो है वो फेमस है, उसको रिवाइव किया जा रहा है स्किल इंडिया के एक पायलट प्रोजेक्ट के अंदर। तो नामदा आर्ट 16th सेंचुरी में जो है शुरू हुआ था, जब मुग़ल एम्परर अकबर ने अपने हॉर्स को जो है कवर करने के लिए जो है कोल्ड से बचाने के लिए जो है ये नामदा आर्ट के जो है वो जो है क्लोथिंग को एक तरह से जो है वो शुरू करवाया था। एक सूफ़ी सेंट थे शाह ए हमदन जो है, उन्होंने कश्मीर में इसको जो है इंट्रोड्यूस किया था। ये जनरली ट्रेडिशनल कश्मीरी जो है जो है कारपेट इसको इससे ऑफ कोर्स नामदा आर्ट के थ्रू बनाया जाता है। और इसमें जो है फेल्टिंग की जाती है। फेल्टिंग मतलब क्या होता है कि सिला नहीं जाता है इसको, वोविंग की नहीं की जाती है। आप इसको जो है वो सैंडविच कर देते हो, मतलब मार मार के ऊपर से प्रेस कर करके जो है वूल को, आप एक पिंजरा कहते हैं उसको, एक टूल को, जिससे इसको प्रेस किया जाता है वूल को, और उसके थ्रू जो है ये कारपेट बनाया जाता है। अलग अलग तरह के फ्लोरल पैटर्न्स, फ्लावर्स, लीव्स, बर्ड्स एंड फ्रूट्स जो है वो पैटर्न्स बनाए जाते हैं, और बहुत ही सुंदर ये नामदा आर्ट जो है कारपेट्स जो है वो कश्मीर में फेमस हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हम्पी। ये आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। थर्ड शेरपास की मीटिंग हो रही है इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी में, अभी रिसेंटली हम्पी में हुई है। तो इसको हम्पी को हम पंपक क्षेत्र या ऑफ किशिकिंदा भी कहते हैं। सेंट्रल कर्नाटका में ये हम्पी लोकेटेड है, तुंगभद्रा रिवर के पास। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये एक टाइम पर विजयनगर एम्पायर की कैपिटल भी रही थी। और अगर हम इसका आर्किटेक्चर देखें तो बहुत सारे यहाँ पर ग्रैंड टेम्पल्स हैं, विरूपक्ष टेम्पल, विट्ठल टेम्पल, लोटस महल, क्वींस बाथ, एलिफेंट स्टेबल। ठीक है, अब विट्ठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो सबसे फेमस है यहाँ पर, ये 15th सेंचुरी में बनाया गया था ड्यूरिंग किंग देवराया टू रेन, और इसके कुछ जो है पोर्शंस जो हैं कृष्ण देवराया ने भी बनाए थे। अब जो ये लॉर्ड विट्ठल जी हैं, ये इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु है। इस टेम्पल को द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया गया है। ओरिजिनली इसमें सिर्फ एक ही मंडप था, लेकिन बाद में जो है इसमें 1554 में एक और मंडप ऐड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं परसिवरेंस रोवर। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यूएस के जो नासा हैं, उन्होंने जो है परसिवरेंस रोवर के थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर किए हैं मार्स के क्रेटर में, जजेरो में। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम फाइंडिंग्स देखें कि जो है परसिवरेंस रोवर ने क्या फाइंड किया है, तो मार्स जो है उसकी जो जियोकेमिकल साइकिल है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। वाटर जो है इसमें एक बहुत बड़ा रोल उसने निभाया होगा, कहा जाता है यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर बनाने में। एक बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर कभी ना कभी लाइफ एग्जिस्ट करती थी, खासकर इस जजेरो क्रेटर पे की जो फाइंडिंग्स है इससे हमें ये पता लग रहा है। शेरलॉक नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे जो है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और मिनरल्स जो है रॉक सर्फेसिस से मैप किए जा रहे हैं। अब जो ये परसिवरेंस रोवर है, ये एक रोबोटिक एक्सप्लोरर है जो मार्स पर लैंड हुआ था 2020 में, और जो है एक्चुअली 2021 में लॉन्च हुआ था 2020 में। और ये सैम्पल्स ऑफ रॉक एंड सॉइल वहाँ से कलेक्ट कर रहा है, ताकि जो है उस सैम्पल्स से हम जो है अर्थ पे रिटर्न कर सकें उन सैम्पल्स को, और देख सकें कि क्या जो है एंशंट लाइफ जो है वहाँ पर थी, या फिर फ्यूचर में भी कोई लाइफ वहाँ पर पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, so now let us see all these topics in English. So the first topic is Scorpion class submarines and Rafale marine jets. This topic is important for your security section and your international relations both. So recently, you know that DAC had given the approval of acquiring military equipment for India's armed forces, including the Scorpion class submarines and Rafale marine jets from France. And these deals were signed during Prime Minister Modi's recent visit to France. So what is, of course, a Scorpion class submarine? You know that under the Transfer of Technology Agreement, Project 75 was signed between India and France. So French defense firm Naval Group has transferred its technology to Mazagon Dock Shipbuilders Limited in Mumbai to build these 6 Scorpion class submarines under this project. Okay, so INS Kalvari, INS Khanderi, INS Karanj, INS Vela, INS Vagir, INS Vagshir, all these are being made. Some of them, of course, all of them have been made, and the INS Vagshir has even begun her sea trials. Okay, so what are the capabilities of these Scorpion submarines? They are about 220 feet long, 40 feet tall, and they can reach the top speeds of
20 kilometer per hour. They use diesel electric propulsion systems. Of course, they are not nuclear submarines, and they also have this air independent propulsion system, which of course boosts its endurance. If we compare it with the nuclear submarines, of course, then nuclear submarines are having unlimited endurance because they have nuclear fuel with them, so they can produce electricity for an infinite amount of time. Okay, so India has two nuclear powered submarines also. Both of them are Arihant class submarines, but despite their advantages, it is very expensive to maintain these nuclear submarines. So that's why we are looking at uh, these Scorpion class submarines, and they will be, of course, made in India under the Project 75 only. So, Indian Navy currently has 16 conventional submarines in service, and to carry out our full spectrum of operations, Indian Navy needs at least 18 such submarines. So you know that already 30% of submarines generally remain under repair or retrofitting. So that's why we need higher number of submarines so as to carry out full functions of Indian Navy. Now let us see about Rafale jets and their marine version. Of course, it is manufactured by Dassault Aviation, a French company, and this is a Rafale is a advanced twin-engine multi-role fighter jet, which is equipped with latest weapon systems. It is fitted with modern sensors and radars to detect and track and attack targets. So the naval variant, of course, would be slightly different from the Rafale fighter jets. Marine version would have foldable wings, a longer airframe for landing on aircraft carriers. It will also have a tail hook because you know that it becomes a little difficult to land a fighter jet on aircraft carriers because they have a small runway as compared to the conventional ones. So there will also be jump strut technology, which acts as a shock absorber, so that it gives an angle of attack during catapulting to the fighter jet. So what is the need of Rafale? Because currently at INS Vikramaditya we are operating Russian MiG-29Ks, but they are expected to retire in a decade. So that's why we also have now two aircraft carriers. So we need to procure additional tech-based fighter jets to meet our operational requirements. So the next topic is CPTPP. This topic is important for your international relations. UK has formally agreed to become the first European country to join the CPTPP agreement. This is basically a free trade agreement which has been signed between 11 nations, and it was signed in March 2018 after US withdrew from the original Trans-Pacific Partnership. Now it has been renamed as CPTPP. So all 11 countries of CPTPP are members of APEC also. So basically this free trade agreement will decide on how the members would cut their tariffs, open their service market to each other, liberalize visa conditions, etc. What is APEC? APEC is a forum of 21 Asia Pacific economies, and it was established in 1989. So the aim, of course, is to promote free trade and economic cooperation through Asia Pacific region, and its headquarters is located in Singapore. So all decisions in APEC are reached by consensus. The important information is that India is not a member of it. So the next topic is Grand Cross of the Legion of Honor. This topic is important for your international relations. French President Emmanuel Macron has recently conferred Grand Cross of the Legion of Honor, that is the highest honor of French or France, to Indian PM Modi. So this is the highest French decoration in both civil and military terms. So this was established by Napoleon Bonaparte in 1802. If you want to compare it, then you can compare it with Bharat Ratna, that is the highest award in India. Okay, so even of course the foreigners can be given this Legion of Honor if they have rendered certain services to France, or they have supported causes which are defended by France, like human rights, freedom of the press, humanitarian action, etc. There is no material or financial benefit, and the color of the ribbon that this award through which this award is given is red. So the next topic is Parkinson's disease. This topic is important for your social issues. Neuroscientists have recently found that intensive exercise could slow down the course of Parkinson's disease. So Parkinson's disease is a progressive neurological disorder which affects the nervous system and parts of the body controlled by the nerves. So it is a condition in which a patient holds limited or no control over his movements and on body balance. It generally occurs and it progresses with aging. There is currently no cure for Parkinson's disease, and men are more likely to be affected by Parkinson's than women.
Okay, so Parkinson's disease is generally caused by degeneration of nerve cells. Under this, due to this disease, the nerve cells die or they become impaired. So tremors also start due to slowness of movement and impaired balance and coordination. So, Parkinson's patients may also experience other symptoms like difficulty in swallowing, chewing, speaking, urinary problems, etc. Currently, there is no blood laboratory or radiological tests which are available to diagnose Parkinson's disease. So the next topic is measles. This topic is important for your social issues. UK Health Security Agency has warned that London is standing at a risk of major measles outbreak, which is a highly contagious and serious airborne disease, and it is caused by a virus which infects the respiratory tract. The first sign of measles is usually high fever, and it begins generally after 10 to 14 days of exposure to the virus. Then slowly the rashes start erupting over the body after several days. Generally, the unvaccinated young children and pregnant people are at the highest risk of severe measles complication. Currently, there is no specific antiviral treatment, but of course, the vaccine is available. So that's why vaccination is the best bet against this measles and rubella. Okay. So the next topic is Rubber Board of India. This topic is important for your economy section. Central government has recently dismissed the concerns over a new rubber bill and the rumors that the government is planning to disband this Rubber Board of India. So Rubber Board is a statutory organization which was constituted under the Rubber Act of 1947, and it functions under the administrative control of Ministry of Commerce, and it is also responsible for the development of rubber industry. It maintains the statistical data of rubber, and a crucial function of rubber is also to issue licenses. It is headed by a chairman, which is appointed by the central government. So it has 28 members. Its headquarters is located in Kottayam, that is in Kerala. The next topic is Production Linked Incentive Scheme 2.0, that is PLI 2.0. So recently, of course, this topic is important for your economy section. Recently, operational guidelines of a PLI 2.0 scheme for IT hardware has been finalized. This is basically a scheme in which financial incentives are given to boost domestic manufacturing and attract large investments in the value chain. The benefits will be available to both global and domestic companies who are working in the field of laptop, tablet, all-in-one PCs, etc. And they will receive support for manufacturing goods in India. And there will be certain classifications like hybrid classification category, or the category, which means that a company is both globally and domestically owned. And there will be, you know how this PLI scheme works. If you add more sales on year by year basis, then of course the increment in sales, for example, let's understand this with example. In this case, the base year is of course 2022 and 2023. Let's suppose that you have made a sale of 100 units in 2022-2023, and if you do the sale of, let's say, 150 units, then the additional 50 on that 50 additional units, you will be given certain incentives by the government, let's say 2% or 5% incentives. Okay, so that you can of course be motivated to increase your sales in India by producing more and more for the country. Okay, so the next topic is Umiam Dam. This topic is important for your environment section. Authorities have recently informed that water from Umiam Dam may be released anytime soon. So this Umiam Dam is known as Barapani Dam, and it is located in the state of Meghalaya in northeastern India. It is situated on the Umiam River, and the primary purpose of this dam is to provide hydroelectric power generation and supply drinking water to the region. The construction of this dam began in 1964 and it was completed in 1965, and it was built by the Assam State Electricity Board at that time. Okay, so the next topic is Namda Art. This topic is important for your art and culture section. Union Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship has recently flagged the first batch of Namda art products for export to the UK. So Namda Art of Kashmir is very successful and very famous, and it is being revived under the Skill India's pilot project. Namda art began in 16th century when Mughal Emperor Akbar wanted to get a covering for his horses. So this art was introduced by a Sufi saint named Shah Hamdan to Kashmiris, and this is basically a carpet art in which the traditional Kashmiri carpets are not woven but they are felted. So basically a sandwich of layers of wool are flattened over each other, and that's how this carpet is made. And a tool that is used to felt this
or flatten this wool is called pinjra. Okay, so unique themes and floral patterns are there on these carpets, like flowers and leaves, buds and fruits, etc. Okay, so the next topic is Hampi. This topic is important for your art and culture section. So the third Sherpas meeting under India's G20 presidency was recently held in Hampi, which is also known as Pampak Kshetra of Kishkinda. This Hampi is located in central Karnataka on the banks of Tungabhadra River. It is also a UNESCO World Heritage Site. So it was also once the capital of Vijayanagar Empire. It has numerous grand temples like the Virupaksha Temple, Vitthal Temple, Lotus Mahal, Queen's Bath, and Elephant Stables. If we look at the Vitthal Temple complex, then it dates back to 15th century. It was built during the reign of King Devaraya II, and several portions of the temple were also made during Krishna Devaraya's reign. Okay, so who is Lord Vitthal? He is the incarnation of Lord Vishnu, and this temple is built in the Dravidian style of architecture. And originally, it had just one enclosed mandap, but later on, an additional mandap was added to it in year 1554. The next topic is Perseverance rover. This topic is important for your science and tech section. Recently, NASA through Perseverance rover has discovered evidence of organic compounds in a Martian crater called Jezero. So, this Perseverance rover has found that Mars has a complex organic geochemical cycle, and there is a possibility that water may have been a significant factor in the Mars Mars vast range of organic matter, and it is also possible that uh, past habitability existed on this, especially on this site of Jezero crater. So Sherlock named instrument was used to obtain or to map the distribution of organic chemical molecules and minerals on rock surfaces of Mars. What is this Perseverance rover? So it is a robotic explorer which was made to land on Mars in 2021 as part of NASA's ongoing Mars 2020 mission. So the main job of this Perseverance rover was to seek signs of ancient life and collect samples of rock. So it successfully landed on Mars Jezero crater on Feb 18th, 2021, and its aim is to bring back the samples of rock and soil so that we can see if there's a possibility of life on Mars. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.